Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's take a look at some stories from this week's episode. People's lives go to rack and ruin in illegally occupied Gilgit-Baltistan as government remains apathetic to problems. Post-floods plight compound as administration turns a blind eye to deteriorating situation in Gilgit-Baltistan. Authorities in J&K pushing for better sports infrastructure. The scope and scale of opportunities to rise for youth with holistic makeover of PG College in J&K's Rajouri. And later in a section of Incredible India, we'll take you to witness the celebrations of Onam and Nuakhai. The people living in the illegally occupied territory of Gilgit-Baltistan are suffering due to its government's negligence and poor policies. Even to demand their basic rights, they have to go through a lot of struggle. It appears that the hardships endured by the residents of Gilgit-Baltistan will never stop. People are facing food and water shortage along with frequent power cuts. We have a report. Women in Gilgit-Baltistan recently took to the streets to protest against the water shortage that has made their life miserable. Boiled over the government's apathetic attitude, demonstrators blocked the road near the college area, restricting the movement of vehicles. Not only water, but people of this region are also facing problems of load shedding due to continuous ignorance and a corrupt administrative system. Even though the area has a number of power plants and a steady supply of river and rainwater, the local authorities have failed to give the population proper water and electrical supply. फिलहाल गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई वालों को हमने वोट दिया है, हमारे पास आए थे और उसने बाद में हमें कहा भी कि हम आपको मतलब ये पोल मोल ये मुतालिबा हमने रख के वोट दिया था उसको, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। तो लिहाजा हमारा मुतालिबा है खालिद खुर्शीद साहब से जो गिलगित बल्तिस्तान के सीएम है, हाँ, तो यहाँ इतने लोग हैं, गरीब लोग हैं और यहाँ इनके लिए बिजली फराहम की जाए। पोल नहीं है, तकरीबन कोई 10-12 साल हो गए लोग इधर अपनी मदद आप रहते हैं, मतलब यहाँ से दरिया से पानी ला के पीने के लिए कभी कभी ऊपर से मतलब लोगों से मांग कर या कोई ऐसा कोई वो करके पानी लाते हैं अपने लिए, ज़्यादातर नीचे दरिया से ला के खाना पड़ता है पानी। While illegally occupied Gilgit-Baltistan is already suffering due to floods, the severe shortage of food supply is rubbing salt on their wounds. Already boiled over the subsidy cut on wheat, locals are now simmering with anger as the limited supply is being sold at exorbitant costs, making it impossible for those in need to acquire it. The hardships faced by the people don't seem to bother the authorities even a bit. Many people are affected due to this government's apathetic attitude. वहाँ पे कोई 20 गाँव हैं, उनको कोई राशन अब तक नहीं मिला है, न इदारे की तरफ से न गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम गवर्नमेंट से और इदारों से गुजारिश करते हैं कि उनका भी थोड़ा ख्याल रखा जाए। जो हालिया बारिशें हुई है उसमें तो बहुत सारे तबाहियाँ हुई हैं, लेकिन हम जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया इस वक्त हम 2-2.5 महीने से इस वक्त हम कट ऑफ में हैं। इस वक्त हमारे पास खुराक की भी शदीद किल्लत है और जो वहाँ पे जो बीमार लोग हैं उनके लिए भी शदीद तकलीफ़ है। इन बारिशों में हमारा रोड मुकम्मल डैमेज हुआ है, हमारी फसल मुकम्मल तौर पे जो कटी हुई फसल थी वो भी ख़राब हो गई, तबाह हो गई और जो कुछ फसल बचे थे वो भी इस वक्त वो सड़े हुए हैं। Neither the government nor the authorities are interested in the region's development, turning it into the most neglected and backward region of Southern Asia.
And flash floods triggered by torrential rains have wreaked havoc in the illegally occupied region of Gilgit-Baltistan. And with no state support in the pipeline, the picture of misery and helplessness is getting grimmer by the day. The government's apathetic response to the current crisis is yet another testament to the fact that people in the region continue to endure a second-class treatment under the Islamabad-controlled administration. Demolished houses, ravaged trees, debris flow, places of worship collapsed, and the helplessness of locals. This is the picture of Hopper Valley in the Nagar district of illegally occupied Gilgit-Baltistan, where torrential rains and flash floods have inflicted havoc. This area has faced massive destruction, and people are living in tents for shelter because their houses have been destroyed and they have nowhere else to go. 24 या 25 दफ़ा दिन में 3 भी 4 भी कभी 8 दफ़ा भी सैलाब आया है यहाँ पे और 11-12 घर तो मुकम्मल तबाह हो चुके हैं और उनको हमने ऊपर सेफ जगह पे टेंट में शिफ्ट किया है फैमिलीज़ को और ज़मीनें तो तकरीबन कोई 250-300 कनाल के करीब ज़मीन विद फसल जो साल का उनकी काश्तकारी थी उसके साथ डैमेज तबाह हो गया है और ये आपके सामने है मलबे का ढेर ही ढेर नज़र आ रहा है. With the onset of winter, people living here will be exposed to extremely cold weather because they are living in tents and have no place else to live. People are requesting the authorities to provide them with permanent rehabilitation, but their pleas don't seem to bother them a bit. Even after 2 weeks, these people are facing hardships and the authorities have done nothing to help them. 12 से ज़्यादा जो ख़ानदान हैं वो मुकम्मल तौर पर बेघर हो चुके हैं और टेंट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अब ये मुकम्मल बेघर हो चुके हैं. इनके पास अल्टरनेट कोई रहने के लिए कोई जगह या घर नहीं है. ये हुकूमती लोगों से भी मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले इनकी जो अल्टरनेट रहने के लिए इनको घर जो है फराहम करे, उनका बंदोबस्त करे. हमारा घर डैमेज हुआ और माल मवेशी सब मतलब और हमारा माल मवेशी वो घर ज़मीन वगैरह वगैरह सब तबाह हुआ. एक टेंट मिला है और राशन 2 दफ़ा गवर्नमेंट ने राशन दिया है. इससे अलावा हमें कुछ नहीं मिला. गवर्नमेंट से अपील है हमें कोई रिहाइश दे दे, हमें कहीं शिफ्ट करे. It's not the first time that floods have hit the region. Almost every year, the same situation arises, but even then, the authorities have made no learning. Suffering the fury of nature, locals who are seeking fundamental assistance from the administration have received mere condolences from them, rubbing salt to their festered wounds. Well, from providing financial aid to young sportsmen to organizing various sports competitions and events, a number of steps have been taken by the authorities in Jammu and Kashmir to promote the sports sector. In the same line of efforts, a new indoor sports stadium has been constructed and inaugurated by Lieutenant Governor Manoj Sinha. Have a look. Authorities in Jammu and Kashmir are taking a number of initiatives for making sure that growth and development reach even the most far-flung areas of the territory. The construction of indoor sports complexes in all districts of the Union Territory is a part of this endeavour. Recently, a newly constructed indoor sports stadium was inaugurated by Lieutenant Governor Manoj Sinha at Elahi Bagh in Srinagar city in coordination with the J&K Sports Council. This will bring ample opportunities for the local youth to indulge in various sports and hone their skills. डाउनटाउन के खिलाड़ियों के बेहतरीन परफॉर्मेंस की आज चर्चा हो रही है. स्पोर्ट्स के प्रति यहाँ के नौजवानों का मोटिवेशन, डेडिकेशन देखकर
आजकल बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी भी कहने लगे हैं कि श्रीनगर का शहर खास, श्रीनगर का यह डाउनटाउन चैंपियंस का हब बनता जा रहा है। Well equipped with facilities for games like kabaddi, volleyball, kho-kho and other outdoor games, this stadium will also provide an outfield where children can play cricket, football, etc. Local residents and players are effusive in their praise for the central government for taking such an initiative, as it will not just give a boost to the sports sector, but also help in channelizing the energy of the youngsters who are indulging in illegal activities. ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये शहरी खास में एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क बना स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लिए। जो यहाँ नज़दीकी ऐसा जो फैसिलिटी है इंडोर है, TRC श्रीनगर में है, पोलो ग्राउंड में। और अगर इस समेत में आप बात करेंगे तो गांधरबल में अगर इन बिटवीन जो हमारे इलाका जात के बच्चे हैं वो इस फैसिलिटी से महरूम है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये फैसिलिटी बनी है। हम शुक्रगुजार हैं ऑल स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी की तरफ से। हम शुक्रगुजार करना चाहेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने इतनी फैसिलिटीज़ PMDP के थ्रू यहाँ पे फराहम करवाई, यहाँ के बच्चों के लिए कोचिंग की सहूलियात फराहम करवाई, यहाँ के बच्चों के लिए सामान की सहूलियातें फराहम करवाई। Many sports infrastructure projects have been introduced by the government to bring rapid development in Jammu and Kashmir's sports sector. As of August 2022, sports infrastructure worth rupees 18.10 crores has been inaugurated by Lieutenant Governor Manoj Sinha. The recently inaugurated projects include a synthetic football turf at Khelgaon in Nagrota, a mini stadium at Bhorkam, Chatta and a play field at Purmandal. The famous Bakshi Stadium in Srinagar has been upgraded and revamped at a budget of rupees 59 crores. Sportspersons in the territory hope that these upgradations and increase in facilities will help them to proceed speedily in the direction of their dreams. ये तो बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है हमें, क्योंकि हमें इससे पहले लाल चौक जाना था। एक ही स्टेडियम है यहाँ पर कश्मीर में, पहले तो एक ही था पोलो ग्राउंड में, तो हमें बहुत दिक्कत आती थी पहले भी। यहाँ पर मतलब लड़के बहुत दूर दूर से आते हैं, तो इसलिए ये जो यहाँ पर स्टेडियम बना है ये हमारे लिए फ़ायदा है। इसलिए क्योंकि अभी मतलब जो यंग जनरेशन है वो किसी और काम में जा रहे, कई मतलब ड्रग्स की तरफ जा रहे, कोई किसी और काम की तरफ जा रहे, गलत कामों की तरफ। इसलिए ये अच्छा हुआ कि यहाँ पर ये जो इंडोर स्टेडियम बना है। हम तो ओपन में खेलते हैं सर, ठीक है, आउटडोर खेलते हैं सारे। तो मतलब मौसम आपको पता ही है कश्मीर का मौसम कैसा होता है। पहले तो 3-4 महीने बंद ही होता है यहाँ पर विंटर्स में, तो जैसे ही गर्मी आती है तो कभी कभार बारिश भी होती है, आउटडोर हम खेल नहीं पाते। इंडोर की वजह से ये होता है कि हमें यही बेनिफिट मिला कि हम कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंटिन्यू मैच कर सकते हैं यहाँ पर। With better training and modern infrastructure, the youth in the valley can represent India on international platforms. The J&K administration is working with a mission to take sports to the next level in the territory and provide opportunities to the youth even in the far-flung areas. The Jammu and Kashmir administration is taking a number of initiatives to improve educational facilities in the Union territory. Moving on the same lines, various infrastructural developments along with other programs have been introduced at a post-graduation college in Rajouri, which is providing the best facilities to the students. Have a look. Students of Rajouri district in Jammu and Kashmir are now waking up with a new ray of hope as education facilities are constantly becoming better in the region. All thanks to the authorities who have introduced new courses and infrastructural advancements at PG College, Rajouri. These developments are a major upgradation in the college, which has indeed encouraged more students to pursue higher education and degree courses.
A number of skill development classes, short and long-term courses, debates, symposiums including 2 international conferences are organized in the college for students to interact with various experts from different fields and grow in their respective fields. हमारा कॉलेज जो है इस वक्त हर स्फीयर के अंदर अपनी एक्सीलेंस को शो कर रहा है। एकेडमिया जो हमारे कॉलेज का है, जैसे आपने कहा है कि यहाँ के जो पास आउट बच्चे हैं वो इस वक्त बड़े दूर दूर पहुँचे हुए हैं। यहाँ जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि यहाँ के बच्चों ने IAS, KS, और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ की 90% जो हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर्स हैं, इवन प्रिंसिपल्स, वो इसी कॉलेज का प्रोडक्ट है। हमारे जो रजौरी ये PG कॉलेज है बहुत ही अच्छी और गुड फैसिलिटीज़ के साथ अवेलेबल है यहाँ पे। अभी हमारे PG कोर्सेज भी 2-3 नए आए हैं, तो उसमें भी जो BA और BSc बच्चे हैं वो अवेल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे कॉलेज में हर किस्म की पूरी फैसिलिटीज़ हैं। ग्राउंड अच्छा, उसके बाद अच्छे स्टाफ, हमारा बेहतरीन स्टाफ है हमारे कॉलेज के अंदर, बहुत अच्छे और माहिर टीचर हैं। उसके बाद भी हमारे कॉलेज में हर किस्म की फैसिलिटीज़ है। लड़कियों के लिए अलग गार्डन है। उसके बाद मतलब पूरी तरीके से एक अच्छा कॉलेज है। उसके बाद हमें ये चाहिए कि इसमें और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। The infrastructural development in the college premises include the construction of a 4-story building where science lectures will be organized for students. Another building has entered its final stage of construction, which will be turned into a 140-bedded girls' hostel. Free accommodations will be provided to girls, which will encourage more girl students, even from far-off places, to come and study. Apart from that, improved technology and equipment have also been introduced in the college to help students in their studies. तो हमारे पास एक नया कोर्स आया है, खासकर गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं, जो वो लड़कियां जो 6th सेमेस्टर में पढ़ती हैं या पास आउट हो चुकी हैं और किसी डिस्टेंस मूड से PG कर रही हैं, उनके लिए हमारे पास 5 महीने का स्किल कोर्स जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसकी कोऑर्डिनेटर जो हैं वो प्रोफेसर सुप्रिया गुप्ता हैं। और ये जो 5 महीने का स्किल कोर्स है ये ऑनलाइन होगा और इसकी क्लासेस लगेंगे वीकेंड पर, मीन सैटरडे और संडे को, और फिर 5 महीने के बाद इनका एग्ज़ाम भी होगा और ये कंपनी जो है ये प्लेसमेंट भी करवाएगी। Authorities in Jammu and Kashmir have been taking a number of steps to enhance the education system in the territory. For the year 2022-23, a budget of Rs 11,832 crore has been allocated by the J&K government for education sector. The new Education Policy 2020 is implemented in all schools and colleges in the territory to ramp up the existing education structure. 25,000 additional seats and 50 new colleges have been added in the last 1 year. 16 colleges in Jammu and Kashmir have been chosen to offer the skill development program in addition to undergraduate programs. यहाँ हमारे इस कॉलेज में तीनों स्ट्रीम्स पढ़ाई जाती हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, और कॉमर्स के साथ साथ हमने एक प्रोफेशनल कोर्स भी यह शुरू किया है BBA, और उसके बाद हमारे यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और उर्दू में है और अरबी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो है वो करवाए जाते हैं। और ये जो हमारा कॉलेज है ये NAAC एक्रीडेटेड है, और ये NAAC एक्रीडेटेड साइकिल 3rd है इस वक्त। It is through the continuous steps taken by the authorities in Jammu and Kashmir to transform the education system in the territory that youngsters of the territory are building a solid foundation for their future and are progressing in the direction of their dreams.
Being an agrarian society, India celebrates a number of harvest festivals that form an integral part of the country's cultural legacy, and over the centuries, they have evolved in various forms. Onam, which marks the commemoration of the Vamana form of Lord Vishnu, and Nukai, an agricultural event, are amongst the biggest harvest festivals that are observed with much enthusiasm. Have a look. India celebrates a number of harvest festivals to pay homage to the gods for blessing the people with crops and fodder. Different regions in the country celebrate their harvest in the form of a number of different festivals like Makar Sankranti, Lohri and more. In Kerala state of southern India, fragrance of fresh flowers filled the air as the state celebrated the 10-day-long annual harvest festival of Onam with great zeal and colour. The festival commemorates legendary King Mahabali's or Maveli's entry back into the state. It is said that the state witnessed the golden period during the king's reign. Women wear the kasavu sari, which comes in shade of white and gold, to mark the occasion. It is very pleasant atmosphere here. 2 years we didn't celebrate Onam. I'm very happy now. We have a big grand function here. We have Onam flower carpet, then swing and all the other celebrations. I'm very happy. As Onam is all about flowers, people make beautiful rangolis using flowers, which are also known as athappu. On this day, Keralites organize different games and also enjoy dancing and playing on the swings. Locals prepare a spread of delicacies which is known as sadhya. It is an important meal consisting of traditional vegetarian dishes usually served on a banana leaf. Onam preparations start months before the actual festival begins. As people were not able to celebrate the festival for the last 2 years due to the pandemic, this year's festivities were organized on a grand scale. School children celebrated Onam by participating in Tiruvadira, a popular dance form in Kerala. Parents, teachers and students made a 30 meters diameter rangoli with flower petals to mark the occasion. Today, Team Pattam is celebrating Onam with all its pomp and splendor. We are very much excited and happy also. All our students are enthusiastically participating in all the programs which are arranged over here. Actually, we have started the arrangements 1 week before, and the teachers, students, PTA, all jointly has convened all the programs over here. Because of this COVID pandemic, we couldn't celebrate Onam for the past 2 years. We have prepared all these things actually weeks ago. All teachers, non-teaching staffs, PTA members, mother PTA members, then parents and students have included in planning, arrangement and preparation programs to reach this splendid situation. Boat races have always been an important part of Onam celebrations. In Alapur district, the 68th edition of the Nehru Trophy boat race was organized after the 2-year pandemic break at the Punnamada Lake. A total of 77 boats, including 20 snake boats, participated under 9 categories in the race. Visitors were seen filled with enthusiasm as they cheered for their favorite teams during the race.
In Thiruvananthapuram city, street artists performed Pullikali, a folk dance to mark the celebrations. These artists had their bellies painted with faces of tigers and panthers and wore animal masks as they danced to the beat of the drums. ഇത് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നേക്കണേ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കണതാ പരിപാടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള എല്ലാവരെയും അന്ന് അർമാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നേക്കണത് ഞങ്ങൾ. Meanwhile, in Odisha, locals celebrated the 3-day-long Naukai festival, which is another harvest festival. Also referred to as Naukai Parab or Naukai Bhet Ghat, it signifies the celebration of newly harvested rice produce. People worship food grains on this auspicious day, which is looked upon as a new ray of hope. The mandate says that the newly harvested rice is cooked and served first to the local presiding deity. Then, the entire family sits down to eat together. Apart from cooking the new crop, a number of food items are prepared to celebrate this special day. The preparation for the festival starts at least 2 weeks ahead. The houses are cleaned up, new clothes are bought, and on the big day, everyone gets decked up in their best. नुआखाई हमारे पश्चिम उड़ीसा का सबसे बड़ा त्योहार है और हम 1 साल से इसके इंतजार में रहते हैं कि कब नुआखाई आएगा और हम लोग कब सेलिब्रेट करेंगे। तो आज है नुआखाई और हमारे घर के सब बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े सब मिलके आज नुआखाई पालन किए और हमारे जो इष्ट देवी हैं उनके सामने हम मतलब भोग लगा, उसके बाद फिर हम लोग भोग खाए और सबसे आशीर्वाद लिए बड़ों से। अभी हम लोग जाएंगे हमारे इष्ट देवी गांव के जो इष्ट देवी हैं माँ घंटा सुनी उनके मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे जाके माँ से आशीर्वाद लेंगे। It is festivals like Onam and Naukai that are not only a show of flavors and colors, but also of the country's rich cultural diversity. Well, that's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.